Hello everyone, I am Srishti Shah, Maths faculty at IIT Ashram welcomes you all for grade 9 topic of mathematics. Today we are going to discuss about the Heron formula. I think all of you have learned, all of you must be heard about this Heron's formula somewhere. Why do we use this Heron's formula? So we just use Heron's formula to find area of the triangle. Up to this we know that area of the triangle is going to be found with when the height of the triangle is given to us, right? You know that area of triangle is, we can find using the basic formula, right? So area of triangle, the common formula is 1/2 base into height. Everyone you know that when the height is given to you. But what if only the side measures are given and you have to find its area, right? So today we are going to discuss question based on this Heron's formula. So let us learn about the Heron's formula. So first thing is, it is Heron's formula. So how does this arrived? So it is arrived from the name of Heron. He was from the Alexandria, Egypt, right? And he has contributed a lot of work in its geometry section. So we are going to find that how to find area of the triangle when its all sides measures are given to you without height. So let us learn. So Heron's formula, that is area of triangle. Calculate triangle area using only side length. Okay, here side lengths are given to us and we have to find its area. So it is irrespective of any kind of the triangle, whether it is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, whatever it is, we are able to find its area. So what is this actually the formula? So it's a very simple, that is, area of triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. This is the Heron's formula. Now what are this a, b, c, what are this s? So it's so simple. If we have a triangle whose sides are a, b and c, right? So we know that. How do we find perimeter? So perimeter of triangle is sum of all its sides. And what is the semi-perimeter? So semi-perimeter is perimeter divided by 2. What is this a plus b? A plus b plus c, that is the sum of all sides of the triangle. So when we divide a perimeter of triangle divided by 2, then we will get the semi-perimeter. Now how to find and how to use this Heron's formula to find area of the triangle. So first of all, you just noted down the step. So step 1 is that when all the sides measures are given to you, find perimeter of the area. So first step is find perimeter of triangle. Step 2 is to find semi-perimeter of triangle. Step 3, you can find difference of semi-perimeter and the side. Means you can separately find what is s minus a, what is semi-perimeter and the second side, and semi-perimeter and the third side. And step 4 is use the formula to find the area. So use the formula, that is semi-perimeter into s minus a into s minus b into s minus c.
right? So after that, once you calculate all this value, you will get the area of the triangle which is given to you. So today we are going to discuss question based on area of the triangle when the sides are given to you. So let us start. So the first question is, consider a triangle with the sides 7, 8 and 9 centimeter. Right? So first of all we draw the diagram. Suppose ABC triangle is given to us, where the side lengths are 7 centimeter, 8 centimeter and 9 centimeter. So as I spoke to you that first of all we are going to find what is the perimeter of the triangle, right? So step 1, find the perimeter of triangle. So how do we find perimeter? So we know that perimeter is equal to sum of all its sides. So it is 7 plus 8 plus 9. Therefore semi-perimeter is, step 2 क्या था हमारा? Yes, find the semi-perimeter. How would we find this? 7 plus 8 plus 9 divided by 2. How much it is? 24 by 2. Therefore, it is 12 centimeter. Right? Now the next, step 3. You can find difference of semi-perimeter and the sides. So first of all, I am going to find that S minus A. So semi-perimeter is 12 minus the first side is 7. So 12 minus 7, that is equal to 5. S minus B, that is 12 minus 8 and S minus C, that is 12 minus 9. Now the step 4 is put all this value into the Heron's formula and find its area. So area of triangle is equal to so as we know that what is the semi-perimeter? 12. S minus A 5. S minus B is 4. And what is 4 into 3? 12. So as we know that, can we write like this? As we know that whenever a to the power n, nth root of a to the power n is always equal to a. So 12 square and its square root is equal to 12 only. So we can further write it as 12 root of 5. So this one is the value, but do not forget to write unit. As we know that the unit of this side measures are given in a centimeter. So area of the triangle, therefore area of triangle is 12 root 5 centimeter square. Okay. So note it down. We are going to discuss the next question. So this was a basic question when the triangle is given to you and you have to find its area. What is its application into the real life? So whenever the one question is given to you, imagine a park like a triangle with side measuring of the 120 meter, 80 meter and the 50 meter. To determine the amount of landscaping material needed, we must find its area. Right? So how do we find the area? Only the side measures are given to us. So we are going to find its area using Heron's formula. So first we draw the figure. Suppose this one is a triangular park. The side measures are 120 meter, 80 meter and 50 meter. So we are going to find its area. How do we find? Again, same steps you can follow. So what is the step 1?
So I am just writing only one, right? Because now you are aware about this, how to solve this question. So step 1 is find the perimeter of this triangular garden. So perimeter of triangular garden is equal to 120 plus 80 plus 50. So that is equal to 250 meter. Therefore, semi-perimeter is equal to 250 divided by 2. So it is 125 meter. Now we are going to find, we can directly use Heron's formula also, or if you want to go with the step 3, that find the difference of semi-perimeter and the side, you can go with that. But here I am directly using Heron's formula. So I will write that. Therefore, area of garden is equal to square root of s minus a, s minus b, s minus c, and put up all these values and calculate it. So semi-perimeter is 125. 125 minus the first side is 120. Minus 120 is 5, 45 and 75. So how will you find? Are you going to multiply all this number? No, we are just factorize it, right? As we know that the number which is a perfect square inside of this root, we will get, when we take it out root sign, it becomes integer or rational number, right? So 125, I will just write it into its prime factorization. As we know that 125 is a 5 cube into 5, as 45 is 5 into 9, prime factorization, and we know that 9 is the 3 square, okay? 75 is 25 into 3. So now, how many times 5 is there? So you can see cube 5 to the power 1, 25 is also there. 25 we can write it as 5 square. So we write it as 5 square. So how many times 5 is there? So 5 times 5 to the power 7. 9 is 3 square, and if you wish to write like this, you can also write 3 to the power 3, right? Okay, next we come here. आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं. 5 to the power 7 is there. I can write it as 5 to the power 6 into 5 to the power 1. And 3 cube is there. I can write it as 3 square into 3 to the power 1. अब हम सबको पता है कि अगर पावर्स इवन नंबर में है तो बाहर आकर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी. तो 5 to the power 6 is there. So ये क्या हो जाएगा? 5 cube. 3 square is there. Then 3 to the power 1. And these two numbers. 5 to the power 1 and 3 to the power 1. Right? I can write it as 5 into 3. So 5 cube is 125. 125 3s is 375. Root of 15. And what is its unit? Meter square. So like this you have to find. Okay, can we move on next question?
Find the area of the triangle where two sides of which are given to you and the perimeter is 32 centimeter. Here the third side is not given, but we know that perimeter means sum of all the three sides. So तीनों side का sum तो हमें given ही है, दो side का measurement given है, and definitely we can easily find what is the measure of the third side. So first of all we have to find third side. Okay. So for that you can draw the diagram or you can directly write what are the sides. So we can write, suppose in a triangle ABC, the first side is 8 centimeter, second side is of 11 centimeter, third side we don't know, but what is the perimeter? Perimeter of the triangle is 32 centimeter. So the first step to find the area, we have to find what is the measure of third side. So let us find the third side. So perimeter is equal to sum of all the side. So perimeter, here the perimeter is given to us as 32. So 32 is equal to 8 plus 11 plus third side is not given. Let us assume it is the x centimeter. So 32 is equal to 19 plus x. Therefore, the third side x is equal to 32 minus 19. How much it is? 13. So measurement of the third side is, which is not given, that is of 13 centimeter. So what is the measure of this AC side? So now AC is equal to 13 centimeter. So now we are directly find the semi-perimeter. What is the semi-perimeter? So semi-perimeter is equal to perimeter divided by 2. Perimeter is how much? 32. We are not going to calculate again because already it is given. 32 by 2, that is 16 centimeter. So semi-perimeter is 16 centimeter. Now we are going to find area. How do we find? Simple. Again, what we have to use? Yes, Heron's formula. So area of triangle is equal to square root of semi-perimeter s minus a, s minus b and s minus c. Now put up all the values and calculate. So semi-perimeter is 16. 16 minus first side, that is 8. 16 minus 11 and 16 minus 13. So as we know that 16 is a perfect square. So directly I can write it as 4 square. 8 as 4 into 2. 5 3s are 15 and they are only single time. So स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगे, उसको हम स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज इवन पेयर ऑफ दैट नंबर्स आर नॉट देयर. So it is a 4 square into 4. We know that 4 is a 2 square. So I can write it as 2 square into 2 into 15. जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे. तो 4 square it become 4, 2 square it become 2, and what is left in a square root? 15 2s are 30. 4 2s are 8, 8 root 30, and what is its unit? Centimeter square. That is the area of this triangle, right? ओके, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. धीरे 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 बढ़ेंगे क्वेश्चन आगे. जैसे यहाँ पर पैरीमीटर गिवन था, अब कभी कभी साइड रेशियो भी गिवन होगा, राइट, और पैरीमीटर गिवन होगा, तो हमें साइड लेंथ फाइंड करनी होगी. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What is given? A triangular arc ABC has the side 120, 80 and 50. Again we have done it. But इसके साथ साथ कुछ और भी जुड़ गया. हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, बट उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी गिवन है. How much area does she need to plant? So area तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेंगे. Find the cost of fencing
it with the barbed wire at the rate of rupees 20 per meter. So here you have to find perimeter also, because we are going to do fencing around the garden, right? So one more time we will solve this question. So here the diagram is already given. So simple, we have to find area, right? So we just find area of, okay, before that, yes, we have to go with step by step, right? So first find perimeter, then find semi-perimeter, or you can directly find semi-perimeter too. So semi-perimeter of triangular garden is equal to 120 plus 80 plus 50 divided by 2. So as we know that, and what is its unit? Meter. Therefore, semi-perimeter is equal to 125 meter. Now next we are going to find its area. So, how do we find area? Yes, obviously with Heron's formula. Area of triangular garden or triangular park. We have to write the formula S into, yes, अब तो सबको आ गया होगा, आदर आ रहा है ना, एकदम इजी, एक ही फॉर्मूला, जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे बनने वाले हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं बनाऊँ उससे पहले आप बना लोगे. चलो बनाओ. अरे आंसर तो पता ही है. 125 माइनस, हाँ फर्स्ट साइड कुछ भी ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है हम सीक्वेंस में ही जाए. हाँ बट ध्यान रखना कि कहीं पर आप एक ही साइड को बार बार ना लिख दें. So as you know that already we have prime factorized it before, just before. So it is a 5 cube, 5 square into 3, 5 and 5 into 3 square. So you can make over here the pairs, right? So 5 to the power 3, 5 to the power 1, 5 square. So I can write it as 5 to the power 6 into 5 to the power 1 and 3 square into 3 to the power 1. So even power जब भी बाहर आ जाती है क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर पावर जो भी है वो हाफ हो जाएगी. सो आई कैन राइट इट एज अ 5 क्यूब इंटू 3 square root of 15. So already we have calculated, that is 375 root of 15, and what is its unit? Meter square, right? So ये तो हमने find कर लिया the area which is need to plant, right? So don't forget to write your final answer once we complete the solution. Next is find the cost of fencing it with a barbed wire. So to find the fencing or to do the fencing, what we are going to find? Perimeter. That we already know that. What is the perimeter? So perimeter of triangular garden is equal to 250 meter, right? Now the next is, पिक्चर अभी खत्म नहीं है. लिविंग स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट. तो जहाँ पर गेट लगा रहे हैं वहाँ पर तो फेंसिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? सो टू फाइंड फेंसिंग अराउंड द ट्रायंगुलर पार्क, तो कितना वायर लेंथ हमें चाहिए? सो इट्स सो सिंपल. व्हाट डू वी हैव टू डू? 3 मीटर वाइड गेट लगाने वाले हैं तो हमें उतना स्पेस छोड़ देना पड़ेगा, वहाँ पर हम वायरिंग नहीं करेंगे. तो वो कितना हो जाएगा? देयरफॉर वी कैन राइट दैट फेंसिंग टू बी डन
equal to 250 minus 3. So 250 minus 3 is how much? 247 मीटर. तो हमें बार्ब्ड वायर की जो फेंसिंग करनी है वो कितने मीटर में करनी है? 247. Now we are going to find that what is the cost of the wiring if rupees 20 per meter, right? So cost of wiring, so next point is we are going to find cost of wiring. So cost of wiring is equal to 247 and what is the cost per meter? That is 20. So 247 into 2, 240 is 480 and 7 2s are 14. तो join कर लो दोनों को, 494 and 0. So 4940 भाई क्या है ये? Cost है. So what is the unit? Rupees. Then write your final answer because we have find both the thing. That is area to be planned and the next is cost of wiring. So don't forget to write your answer. So area to be planned, area needed to plant is 375 root of 15 meter square and the cost of wiring is rupees 4,940, right? So that is your final answer. Okay, can we move on the next question? उससे पहले आप ये पूरा नोट डाउन कर लो. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो टुडेज टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना हेरोन्स फार्मूला, तो आज हमने ऐसे ही क्वेश्चन कवर अप किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है. द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर गिवन टू यू 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर. देन यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया. इट्स सो सिंपल फॉर यू नाउ, राइट? चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. The sides are given in the ratio. So as we draw one triangle, name it as ABC. भाई ABC से तक गए हो तो PQR दे दो, XYZ दे दो, कुछ भी नाम दे दो. Then after sides are given in the ratio of 3:5:7. So we can write that. Suppose the first side is 3x, 5x and 7x. Here the perimeter is given. So we know that what is the sum of this AB, BC and the AC side. So we can write perimeter is equal to AB plus BC plus AC. Here perimeter is given to us, that is 300 meter. Sides are given in the ratio, so we can write that it is 3x plus 5x plus 7x. अच्छा चलो यहाँ आपके लिए मैं मीटर हटा रही हूँ, अभी इसलिए हटा रही हूँ ताकि आप दो वेरिएबल समझ कर कन्फ्यूजन हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे. उससे बेटर है हटा दिया उसको. 5 plus 3 8 plus 7 is 15. So 15x is equal to 300. Can I write that? Therefore 15x is equal to 300. So x, what is the value of x? 300 upon 15, that is equal to 20. So each term has 20 as their common factor. So now what are the side measures? So we can write that AB is 3 times of x, therefore it is 3 into 20. What is the side length of AB? 60 meter. Same way we are going to find BC and AC. BC is 5 times of x, means 5 into 20. So what is the side length of BC? 100 meter. Same way we are going to find for AC. AC is 7 times of x. So 7 into 20, it is 140 meter. ओके, तो तीनों तीन साइड मिल गई. अब तो एरिया फाइंड करना है, बहुत इजी है. कर ले साथ में, चलो कर लेते फटाफट. यू विश टू राइट दैट व्हाट आर द साइड मेजर, यू कैन राइट इट. इट इज 60, इट इज
100 and this one is 140, but don't forget to write their unit. Okay, what is the step 1? We have to find the semi-perimeter. So as we know that perimeter is given to us, perimeter is 300 meter, therefore semi-perimeter is 150 meter. Array, 300 by 2, right? So you will get us 150 meter. Now to find its area, area of triangle is equal to, कौन सा फॉर्मूला? हेरोन्स फॉर्मूला. बहुत इजी चैप्टर है ये और क्वेश्चन भी, बस ध्यान रखना है आपको जब कैलकुलेशन में, और कुछ नहीं. बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से जितने भी चाहो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. सेमी पेरीमीटर इज 150, 150 minus 60, 150 minus 100 and 150 minus 140. So it's so simple. अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ. सबका प्रोडक्ट फाइंड करने जाएंगे, उससे बेटर है जस्ट count it. If I write it 150 into 90 into 50 into 10 as 15 into 9 into 5 into, is it okay or not? Tell me. Yes, 40 तो ऊपर भी है और यहाँ पर भी आ गए, तो जब भी फाइंड करोगे प्रोडक्ट वो एंड होगा 40 से, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो ही रही है. 15 is not a perfect square, so we just factorize into its prime product. तो क्या हो जाएगा? 3 into 5. As we know that 9 is a perfect square of 3, so I can write it as 3 square. 5 as it is, and 10,000 is perfect square of 100. तो ये होगा 100 स्क्वायर. ओके, सभी के इवन पैर बना दो अगर हो रहे हैं तो. सो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर, और उसके बाद जिसका पैरिंग नहीं बना है वो आप चाहो तो आप उसको सर्कल भी बनाते जा सकते हो. जैसे मैंने इसको कंसीडर कर दिया, इस 5 और 5 को एक बार कंसीडर कर लिया और 100 स्क्वायर को भी ले लिया. सो बाकी क्या रह गया? ओनली 3. एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर रूट के बाहर निकल कर क्या हो जाएंगे? पावर हाफ हो जाएगी. So it is 3 into 5 into 100, and what is left in a square root? That is only 3. 100, 15 into 100 is 1500. So what is your answer? 1500 of root 3. Right? But suppose in the exam it might be given to you that 1500 root 3 कुछ आंसर नहीं आ रहा है, कुछ आंसर डेसिमल में गिवन है, तो क्या फाइंड करोगे? सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रूट 3 का वैल्यू गिवन होगा. Right? What is the value of root 3? Approximately 1.7, 1.73. We are just considering up to 2 decimal places. So you can also substitute its value root 3 as root 3 is equal to approximately it is 1.73. So we just substitute instead of root 3, that is 1.73, and we calculate our result. So it is nothing else but 15 into 173. Product find कर लो, आंसर मिल जाएगा. And do not forget to write its unit. What is the unit? Meter. So here the area is given to you in a meter square. Right? चलो आंसर फाइंड करके बताना ज़रूर मुझे. नेक्स्ट करते हैं. A traffic signal board indicating school ahead. Right? देखा होगा आप सबने, सिग्नल बोर्ड होता है, ट्रायंगुलर शेप में है. What is written inside of it? That is school ahead. This is an equilateral triangle. Oh, equilateral triangle. What do you know about this equilateral triangle? All sides are equal, right?
Find area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is given to you 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Right? हमें तो area find करना है किसका? Signal board का. And what is the triangle? Which type of triangle it is given to you? Equilateral. So you must be know that equilateral triangle means triangle whose all sides are equal. Right? So we just assume that the side measure of all the three sides are a unit, right? A unit, a centimeter. You can directly also write because perimeter is given 180. तो 180 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो हर एक साइड पे मिल जाएगा. बट अगर आप पहले साइड फाइंड नहीं करोगे ऐसे वाले केस में तो भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे साइड्स कैसे हैं? इक्वल. तो चलो पहले हम फॉर्मूला ही कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Okay, so simply we have to find its area. So we know that area is equal to what? How do we find area? Sides given है, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? Heron's. तो लिख दें हम. बट आप तो कहोगे यहाँ तो तीनों तीन साइड एक है, तो हम तीनों तीन ऐसे ही लिखेंगे. All the three sides are equal, so we will write it as S minus A, S minus A and S minus A, right? So we can simply write this semi-perimeter, it is repeated, it is multiplied 3 times. So we can write it as S minus A whole cube, right? Okay? अब आगे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? वैल्यू पुटअप कर लेते हैं. चलो भाई सेमी पेरीमीटर क्या गिवन है? सेमी पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर. चलो लिख देते हैं. पेरीमीटर of triangle is equal to 180 centimeter. Therefore, semi-perimeter is equal to 90 centimeter because it is half of it. Now substitute the value. So it is 90 into 90 minus 60. अब ये 960 कहाँ से आया? So obviously each sides are equal, so I can write it 3a is equal to 180. Therefore a is equal to 180 by 3. So what is the value of a? 60. into 30 cube. I know that 90 is 30 into 3 into 30 cube. So you can write that 30 to the power 1 and 30 to the power 3. So applying the product rule, we can write it as 30 to the power 4 into 3. Power even है, स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगी? हाफ. So 30 square into root of 3. What is 30 square? 900 and root of 3. But what is its unit? Centimeter square. So like this, we have end up with the solution. Yes, but what problem is there? Do not forget to write your answer. So complete answer in a statement, you must write it. Okay. Can we solve the next one? Ready? याद रहेगा फॉर्मूला? सिर्फ नंबर्स बड़े बनते जाएंगे, बाकी बहुत इजी चैप्टर है, करते जाओ. चलो आगे आ गया नया क्वेश्चन. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122. Dimensions are given. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per square meter per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay?
बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर क्या गिवन है, कुछ जो कॉस्ट गिवन है वो पर ईयर के हिसाब से गिवन है, बट हम तो उसको 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हमें उसका कॉस्टिंग बताना है। तो सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं एरिया कि कितना एरिया हम यूज़ करेंगे। भाई डेफिनेटली जितना यूज़ करेंगे उतना ही पे करेंगे, बाकी का क्यों करेंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो साइड मेजर्स गिवन है, शेप भी आपको पता है ट्राइंगल, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। सो यू कैन गो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, इट्स सो सिंपल, 122 + 22 + 120। हाउ मच इट इज़, 120 + 120 इज 240, 260 एंड 264, बराबर है। सो 264 मीटर इज इट्स पेरीमीटर। वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट स्टेप इज द सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सो सेमी पेरीमीटर इज 264/2, that is 132 मीटर। वैल्यूज़ बड़ी है, घबराना नहीं है, बाकी तो सब इजी है। फाइंड इट्स एरिया। चलो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। चलो सेमी पेरीमीटर है 132, 132 - 122, 132 - 22 एंड 132 - 120। बस कैलकुलेशन ध्यान से करना। 132, भाई क्या बाकी रह गया, 10, क्या बाकी रह गया 110 and 132 - 120, so that is 12। क्या प्रोडक्ट फाइंड करने में टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वी जस्ट फैक्टराइज इन सच ए वे, राइट। और ज़रूरी भी नहीं है हर टाइम आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करो। सपोज 132 को मैंने लिख दिया 12 × 11, क्यों ऐसा लिखा उसका रीज़न मैं बता रही हूँ। यहाँ पर भी एक बार 12 है, सो सीधा 12² हो जाएगा, नो नीड टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स, ओके। 10 इज ऑलरेडी देयर, 110 को मैंने लिख दिया बेटा 11 × 10 and here it is 12. Now you can see that each and every number is repeated 2 times, right? So we are just making it. So 12 and 12. So you can write it as a 12 square. चलो इसी कलर से लिख देते हैं। 11 and 11 you can write it as a 11 square. 10 and 10, so you can write it as a 10 square, right? So we can write it as, it is nothing else but 12 × 11 × 10. What is 12 × 11 × 12? 12 × 11 is 132. So 1320 meter square is area of this triangle, right? तो हमने जो एडवर्टाइज लगाई हुई है वो कितना मीटर एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, 1320 मीटर स्क्वायर जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। बट हमने उसको एज ऑफ रेंट कितने टाइम के लिए दिया है, 3 मंथ्स के लिए, सिर्फ 3 मंथ के लिए। बट प्राइस जो हमें की है, कॉस्टिंग जो हमें दी है, भाई 12 महीने करोगे पर ईयर 5000 रुपीज़ है, वो भी किसका, पर मीटर स्क्वायर का, राइट। सो एज वी नो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इट। सो for 1 meter square they will charge 5000 rupees, right, per year, मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए वो 5000 रुपीज़ ले रहे हैं। Therefore 1 meter square एरिया को अगर हमें 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कितना हमें देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस चीज़ है 5000 × 3/12, बराबर है। क्यों ऐसा, क्योंकि पूरे साल का वो
ले रहे हैं, बट हम तो सिर्फ 3 महीने के लिए कर रहे हैं. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? 3/12. 3 मंथ्स का ही हमें, 12 मंथ्स का 5,000, ऐसे 12 मंथ्स 5,000. Therefore 3 months is how much? Right? So you know that a simple multiplication 3 into 5/12. So I have directly written it is 3/12. बड़े भी तो हो गए हैं, बट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे वो मैं बता रही हूँ. क्योंकि जब भी हम इंटरमीडिएट कैलकुलेशन करते हैं, फिर जब बाद में देखते हैं तो हमारा आंसर कैंसलिंग से झट से आ जाता है. जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें कितना मिला? 5,000 इंटू 3/12 रुपीज़. ठीक है, तो हमारा जो एरिया है वो क्या है? 1320 मीटर स्क्वायर. तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा? इट्स सो सिंपल. क्या कर लेंगे? सीधा मल्टीप्लाई 1320 इंटू 5,000 इंटू 3/12. यू नो दैट 1320 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12. हाँ या ना? 12 उसका एक फैक्टर है, हमने ऑलरेडी देखा है. तो ये क्या हो जाएगा? 110. सो नाउ इट इज़ ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट. बिल्कुल 5,000 इंटू 110 इंटू 3 कर लो, कितना हो गया? 330. सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो 33 इंटू 5. भाई 35 क्या होगा? 150 और 3 5 तो क्या हो जाएगा? 165. एंड हाउ मेनी जीरो आई विल राइट इट एज 1 2 3 4. So how much is the cost we have to pay if we are renting it for 3 months? So that is 16,50,000 rupees. ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, बट आपको आंसर आपके लिए लिखना है, खुद के लिए लिखना आंसर, राइट? डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन एग्जाम, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं. तो हैबिट हम पहले से ही अच्छी रखेंगे ताकि हमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो. आगे बढ़े? लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट वन. देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. हाँ, देखी होगी सबने. वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. If the sides of the walls are given to you and find the area painted in color, right? So what do we have to do? We know that we are just coloring into the whole area, means whole triangle पर coloring करेंगे. So what do we have to find? Its area. Can we solve this? It's too easy. करें? क्या आप खुद करोगे? ट्राई करोगे? चलो एक बार कर ही लेते हैं, बहुत ईजी. Triangular wall, 15 meter, 11 meter and the 6 meter. These are the side. So first of all we are going to find perimeter. So perimeter of triangle is equal to 15 plus 11 plus 6. How much it is? 32 meter. So semi perimeter (16 meter). You must write 32 divided by 2, that is of 16 meter. Now we are going to find its area using the formula. एक ही formula है हमारे पास अभी तो. क्या है? Heron's formula, right? So area of triangle S into S minus A. फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. हम डायरेक्टली स्टार्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला पहले लिखना है. चलो सेमी पेरीमीटर क्या है वो लिख दो, दैट इज 16. 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, ये तो नंबर बहुत छोटे हैं. 16 माइनस 6, 16 minus 15, what is it? How much it is? 1, 5, 10. बिल्कुल भी कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे. 16 एज अ 4 स्क्वायर,
5 and 10 has a 2 factors, 5 into 10, 5 into 2, sorry. So we can write it as 4 square into 5 square into 2. So you can also write it as 20 square into 2. So 20 square, 20 root 2, and what is its unit? Meter square. Okay? Root 2 का वैल्यू बताइए आप सबको, 1.4142, right? So you can use it, and if answer is not given in this third form, you can find the answer by multiplying with 1.41. So 20 into, then you will get the answer in the decimal form. कितना हो जाएगा? 141 into 2. चलो पहले तो डेसिमल प्लेस हटा देते हैं, तो 2 into 14.1, 14 2 28, this 2, तो क्या हो जाएगा? 28.2 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. हमारे पास एरिया आ गया 28.2 मीटर स्क्वायर. अब मैं आपको कुछ पूछने जा रही हूँ. मैं अगर आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, फाइंड द अल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड which is placed on the base 11 meter, side length of 11 meter. तो क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे. क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें हाइट फाइंड करनी है, बेस हमें पता है, और एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट? अब तक जो पढ़ते आ रहे थे, हाउ टू फाइंड एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट. यस, सो डेफिनेटली वी विल यूज एंड फाइंड हाइट बेस्ड ऑन इट. तो चलो कर लेते हैं. नोट डाउन कर लिया ना? यस, चलो इरेज करते हैं इसको और यहाँ पर ही फाइंड कर लेते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, तो आपको पहले एरिया फाइंड करना है. एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट? बट हमें यहाँ पर बेस गिवन है 11, बट हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको एज ऑफ एच ही रखते हैं. और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है जो हमने फाइंड किया, दैट इज 28.2. Therefore, what is the formula to find height? So height is equal to 28.2 into 2 divided by 11. राइट? सो वी विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली. आपको जो करना है पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 11 से डिवाइड करो, दैट इज ऑल्सो ओके. राइट? तो 56.4 को हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही फाइंड करेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो 11 5 are 55, 11 1s and 30 is 2. So approximately it's 5.12 and what is its unit? Meter. किसी का भी पूछ सकते हैं, what is the altitude which lies on the base 6 meter? So you can easily find once you find the area. Okay? We move on the next question. Fine, noted. Again, easy question for you. सबको आता है? रीड करूँ? चलो रीड कर लेते हैं. Find the area of a triangle, two sides of which are 18, 10 and the perimeter is given to you. Yes, हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. चलो इसको भी फट से कर लेते हैं. Perimeter is given, थर्ड साइड फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है. Perimeter is 42 centimeter, side lengths 18 centimeter, 10 centimeter. ये साइड हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया इट इज x सेंटीमीटर. ओके, एज वी नो दैट पैरीमीटर इज सम ऑफ ऑल दिस साइड, सो वी कैन राइट 18 plus 10 plus x, and perimeter is 42, so it is 18 plus 10 plus x. सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली 28 plus x लिख सकते हैं.
Therefore, the length of the third side is 42 minus 28, which is 14 centimeter. तो आपको थर्ड साइड का लेंथ भी मिल गया, दैट इज ऑफ 14 centimeter. So now we are going to find its area. Simply they have not changed question. They have asked straightforward question. Let's find its area. So we write the formula. Area of triangle is सो सेमी पैरीमीटर. अरे सेमी पैरीमीटर फाइंड करना भूल गए, इतने प्रो हो गए ना, सेमी पैरीमीटर फाइंड करना ही भूल गए. फाइंड कर लो. ये सब सब्जेक्टिव के लिए बेटा, सब्जेक्टिव में करो तो हर एक स्टेप करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो सेमी पैरीमीटर, हाँ भाई सारी चीज़ें शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा उसको. सो सेमी पैरीमीटर is equal to perimeter divided by 2. So it is, what is the perimeter? 42. 42 divided by 2, that is equal to 21 centimeter. Right? So now we are going further to find its area. 21 into 21 minus 18, 21 minus 10. Do not write 21 minus x because we know that the third side is 14. So 21 minus 14. Simply we can write 21. 21 minus 18 is 3. 21 minus 14 is 7. Simply 21. Now what is 3 into 7? That is 21. So we just write it as 21 into 21 into 11. So it is 21 square into 11. So 21 square, what is the square root of 21 square? 21 itself. So this one is what your answer, right? And do not forget to write its unit, that is of centimeter square. And write your final answer. Okay? Can we move on next one? Sides of the triangle are given in the ratio, right? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है, right? And its perimeter is given to you. Find its area. So simple. क्या करेंगे स्टार्टिंग में? एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसके साइड मेजर भी लिख देंगे. भाई मेजर तो नहीं गिवन है बट साइड्स गिवन है कुछ रेशियोज. तो हम लिख देंगे कि AB is of 12x, BC is of 17x and the AC is of 25x. So as we know that perimeter is equal to perimeter of triangle is equal to sum of all its sides. तो क्या लिख देंगे? AB plus BC plus AC. So we can simply write that 12x plus 17x plus 25x, right? And what is its perimeter? 540. So we can simply write what is 12 plus 17? 29. 29 plus 25 is 54x. 54x is equal to 540. मतलब 540 is equal to 54x. So I can write it as 54x is 540. Then what is the value of x? Yes, it is 10. Value of x is 10. Side measure is not 10. Now we have to find all the sides. So what is the side length of AB? So AB is equal to 12 times of x. So 12 into 10, that is 120. And what is its unit? Centimeter. Same way we are going to find BC. BC is of 17x. So it is 17 into 10, that is of 170 centimeter. And AC, which is of 25x, 25 into 10, so it is 250 centimeter. Okay, now we have to find the semi-perimeter because we know that before writing the formula, we have to find what is the
semi perimeter. So semi perimeter of triangle is equal to perimeter divided by 2. Perimeter is already given, that is 540. So that is 270. And what is its unit? Meter, centimeter. Now to find area, so we just write area of triangle is, yes, रट गया ना ये फॉर्मूला, कितना इजी है. Now we are just placing the values. Semi perimeter is 270. 270 minus first side, that is 120. 270 minus second side, that is 170. And 270 minus third side, that is 250. Okay, so look at here, the odd number of zeros are there. चलो कैसे करेंगे? सिर्फ नंबर धीरे धीरे बड़े बनते जाएंगे. फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर लो. नंबर ऑफ जीरोस को कॉमन लेना है तो वो कर लो. दैट्स इजी. सो वी कैन राइट इट एज 27 इंटू 15 इंटू क्या करें बताओ? 100 है, 20 लिख देते, नहीं 2 लिख देते. मैंने सीधा यहाँ पर 100 स्क्वायर लिखा, बिकॉज यू नो दैट 1 0 1 0 and it is 100. तो 4 times 0 हो गया, so I can write it directly as 100 square. Right? 20 को मैंने as of 20 ही रहने दिया है. Now I am going to factorize it further. ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका है बेटा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. राइट? 27 is 3 cube, 15 is 3 into 5 and 20 को मैंने लिखा 5 into 4 into 100 स्क्वायर. ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ 3? व्हाट इज द पावर ऑफ 3? इट इज 4 टाइम. सो आई एंड 4 आई कैन राइट इट एज अ 2 स्क्वायर. 5 का भी पैर बन गया है. सो इट्स टू सिंपल टू कैलकुलेट. राइट? 3 to the power 4 into 5 square into 4 as a 2 square into 100 square. So I can write it as 2 into 5 into 3 into 100 whole square. As you know that 2 5s are 10. So 10 into 100 into 3 whole square. क्या हो गया भाई? 1000 into 3, directly I can write it as 3000. That is also okay. So it is square of 3000. What is the square root of 3000 square? That is 3000 itself. Right? So what is it? You have to write your answer. Do not forget to write. ओके सिर्फ नंबर्स बड़े हैं बट कैलकुलेशन तो हमारे हाथ में है. हम चाहें तो उसको एकदम इजी बना सकते हैं. फैक्टराइज करोगे जल्दी से बन जाएगा. प्रैक्टिस रखोगे धीरे धीरे ये हो ही जाएगा. ओके ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन. राइट? एज अर्लियर इट इज मेंशन दैट Heron's formula is used for any kind of the triangle, right? Where the side measures are given to you. No foundation for the particular triangle.
If it is given you a scalar, if it is isosceles, you can simply find its area. So in this case, isosceles triangle is given. So you know that isosceles triangle which has two equal sides and the one of the side which is not equal to third side, right? So what is given? An isosceles triangle has a perimeter of 30 centimeter, right? हमें तो perimeter given है, and each of its equal sides are given to you as 12 centimeter. तो दो साइड इक्वल होंगे और दोनों साइड के मेजरमेंट हमें पता है, दैट इज 12. They have mentioned each equal side is of 12 centimeter. So now we are going to find its area. But before that, शुरुआत तो हमें यहीं से ही करनी है. Two sides are equal. You know that. You are using this symbol to represent these two sides are equal. So what is given? Equal side measure is of 12 centimeter. And unequal side which is not equal, it is not mentioned, but we can find it. How? Because perimeter is given to us, right? So this is the rough diagram. Okay, do not go with that कि BC का length AB और AC से ज़्यादा होगा, right? It's just a rough diagram we are drawing. So as we know that perimeter of triangle is equal to sum of all its side AB plus BC plus AC. You can directly write their side measure also. So as I know that AB and AC are equal sides, so I can write it as 12. And what is the perimeter of triangle? That is given to you as a 30. Therefore, side length of BC is 30 minus 24, that is equal to 6 centimeter. So BC का side length हमें कितना मिल गया? 6 centimeter मिल गया. Now what do we have to find? We have to find its area. So now area of triangle. If you wish, you can write area of an isosceles triangle too, right? Formula तो हमारा नहीं होगा change. Side into S minus A into S minus A and S minus B. अरे ऐसा कैसे लिख दिया भाई? चलो यहाँ पर एक लिख देते हैं एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट? दो साइड इक्वल है, therefore I have written two side measures are equal, so therefore I have written A 2 times. Okay. सेमी पैरीमीटर अगेन फाइंड करना पड़ेगा, बिल्कुल. पैरीमीटर गिवन है तो सीधा लिख देंगे सेमी पैरीमीटर is equal to perimeter divided by 2. Perimeter of triangle is given 30. 30 by 2 is what? 15 centimeter. So we can write 15. 15 minus 2 sides are equal, so that is A stand. I have taken A as a 12 centimeter. What is 15 minus 12? That is 3 into 3 and 15 minus 6 is 9. So now you can know that 15 into 3 into 3, I can write it as a 3 square and 9 is also 3 square. So can I write it as 15 into 3 whole square. So it is 15 into 9 square. As we know that 15 is not a complete square. So what is the square root of 9 square? 9 and root of 15. So this one is your answer. यूनिट बाकी रह गया, लिख दो. और क्या बाकी रह गया? आंसर. ओके. सो ऑलमोस्ट हमने एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे हेरोन्स फॉर्मूला में वो सारे डिस्कस कर लिए, राइट? सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन एंड दीज आर द बेसिक क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन के साथ. ओके, टिल देन बाय.